Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. IPMAT Rohtak exam was conducted recently. In this video, we are going to do the detailed analysis of that exam. First, we are going to discuss about the highlights of the exam. What were the surprises? Were there any new type of questions? Those discussion we will do first. Followed by that, section wise analysis. कि हर सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वर देयर एनी सरप्राइजेस सेक्शन वाइज, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. एंड इन द एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर ऑल द कैटेगरीज. आप बोलो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डीएपी, सारे कैटेगरीज का कट ऑफ इज आल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट अस स्टार्ट. First thing, highlights of the exam. The most important highlight was that two questions of grammar were wrong. Two questions of grammar were wrong. This is something that was a surprise for many students. So the questions were, make the changes in the underlined part of the statement, or what is the mistake in the underlined part of the statement. It was a grammar based question and there was no underlined part itself. So now what will happen to these two questions? अब ये जो दो questions हैं, they will be scrapped. ऐसा नहीं होगा कि आपको overall दो सबको 4-4 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे. No. What will happen? These two questions will be scrapped and अभी आपका जो पहले 480 मार्क्स का पेपर होता था, अभी वो 472 मार्क्स का ही होगा. Okay. There were 3 sections as we are aware about. Verbal ability. It was supposed to have 40 questions, but अभी 2 questions scrap होने की वजह से 38 questions का ही हो गया. Followed by that logical reasoning. Logical reasoning 40 questions जितने expected थे उतने ही आए. Followed by that quantitative aptitude. इसमें भी आपके 40 questions ही है. हर question 4 marks का and there was a negative of -1. अभी इसके वजह से 4 marks का होने की वजह से this section will now be of 112 marks itself. And ये बाकी के दो sections 120 marks के रहेंगे. And आपका total 472 marks का रहेगा. Students could switch between the sections. There was one more surprise. Spelling correction के questions आए थे verbal ability में. We are going to discuss that as well. तो ये ऐसे surprises थे. This was the only major surprise which many students might have not understood. अभी अगर आप ऑप्शंस देख के करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वाला स्टेटमेंट अंडरलाइन रहेगा, बट देन अभी अंडरलाइन पार्ट ही नहीं रहेगा. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड प्रीवियसली इन वेरियस अदर एग्जाम्स. तो ऐसे केस में वो दो क्वेश्चन ही स्क्रैप हो जाते हैं. तो अभी आपका पेपर रहेगा 472 मार्क्स का. 472 में से अभी आपका कट ऑफ निकलेगा. चलो, let us deep dive into verbal ability topic wise breakup. So verbal ability, there were 4 RC sets, 4 RC sets थे जिसमें थे 10 questions. ठीक है, 2 रेगुलर लॉन्ग RCs थे जिसमें 3-3 questions थे एंड एक और सरप्राइज, एक पोयम बेस्ड RC आया था. पोयम बेस्ड मतलब आपको एक RC दिया रहता है और उसके ऊपर आप क्वेश्चंस दिए रहते हैं. अभी एक पोयम बेस्ड एक पोयम दी थी आपको एंड वो पोयम पढ़ के, पोयम समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है देन रेगुलर पैसेज. वो पोयम पढ़ के आपको इंटरप्रेट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे एंड एक एकदम शॉर्ट आरसी था 150 to 200 वर्ड्स का जिसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस आए थे. देन देयर वर 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी. जैसे 2 क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू वर स्पेलिंग एरर क्वेश्चंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग वाज रॉन्ग और which is the correct spelling. ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस मिले थे. सिनोनिम का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एंटोनिम का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, इडियम्स के 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन. सो वोकैबुलरी हैड अराउंड 25% वेटेज. वर्बल एबिलिटी एज आई टोल्ड यू अभी 38 क्वेश्चंस का ही रहेंगे. उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी, 10 क्वेश्चन आपके इसके आए थे. देन वी हैड 8 ऑलमोस्ट 8 कंफर्म्ड क्वेश्चंस ऑन ग्रामर. 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के थे, 2 कंजंक्शन के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट व्हिच इज द इजीएस्ट टॉपिक उसके 3 क्वेश्चंस थे एंड प्रीपोजिशन का 1 क्वेश्चन. देन पैरा जंबल्स, इट वाज बिट लेंदी.
पहले नंबर के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, 2 क्वेश्चंस आए थे, फॉलोड बाय दैट ऑड सेंटेंस आउट। इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आसान थे, 2 क्वेश्चंस थे। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिस इफ यू सी ये पूरा सारे का टोटल 40 नहीं होगा, बट दीज आर द कंफर्म क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आए थे, वी कैन बी श्योर अबाउट दैट। 2 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के ऊपर आए थे। वेन डायग्राम यू कैन ऑल्सो से कि वेन डायग्राम को सेट थ्योरी भी मिलता है कई कई बुक्स में, वेन डायग्राम और सेट थ्योरी, देयर वर 2 क्वेश्चंस, फॉलोड बाय दैट बोट्स एंड स्ट्रीम्स 2 क्वेश्चंस, ट्रेन रिलेटेड 1 क्वेश्चन, सो अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पर्सन रनिंग, ऐसा क्वेश्चन था। अ लॉट ऑफ वेटेज वाज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 परसेंटेज के 2। अगर आप इनको परसेंटेज एंड एक्सटेंडेड टॉपिक्स बोलोगे तो 8 क्वेश्चन परसेंटेज एंड इट्स एक्सटेंडेड टॉपिक से आए थे, which made it a very important part of the quantitative aptitude section. Mixture allocation का भी 1 क्वेश्चन, ratios 2, problems on ages 1, PNC probability there were only 2 questions, geometry mensuration only 3 questions, pipes and cisterns which is a part of time and work, इसके 1 क्वेश्चन, basic algebra, algebraic formulae अगर आपको आते हैं then you would be able to solve these questions, basic algebra के questions थे ये। कैलेंडर का 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री which is again a formula based topic, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 15 से 20 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं then you are good to go। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस आपको नेसेसरी थे। नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, ठीक है। ओवरऑल इफ यू सी द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन was very easy when compared to the other 2 sections, ठीक है। comparatively easy इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि quant is a section जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट comparatively ये वन easy था, क्यों? क्योंकि a lot of weightage was given to arithmetic, है ना। अलजेब्रा के there were very few questions, अलजेब्रा ज्योमेट्री अगर आप पकड़ोगे तो बहुत कम क्वेश्चंस थे, ठीक है। नंबर सिस्टम, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अगर आप पकड़ोगे बहुत कम क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पेपर वाज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, तो इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि भाई मैथ्स थोड़ा सा इजियर साइड पे आया था। नेक्स्ट इज एलआर, एलआर आल्सो अ डूएबल सेक्शन, डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के 3, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट तो एकदम बेसिक जो जिससे हम वार्म अप करते हैं ना, वैसे सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। मतलब जो लेवल के सर्कुलर अरेंजमेंट हमने क्लास में पढ़े हैं वो लेवल के तो सर्कुलर अरेंजमेंट आए भी नहीं थे, जो जिससे हम वार्म अप करते हैं कि भाई ये तो तुमको जम ही जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ गए थे वो सर्कुलर अरेंजमेंट में। लीनियर अरेंजमेंट लेंदी था, देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस ऑन लीनियर अरेंजमेंट, बट ये लेंदी पार्ट था। one of our student took around 6 to 7 minutes to solve this set of linear arrangement, थोड़ा सा लेंदियर साइड पे था। नंबर सीरीज इजी, ब्लड रिलेशन इजी, क्यूब्स एंड डाइसेस 2 क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग वाज अ ट्रिकी पार्ट, क्रिटिकल रीजनिंग वाज अ ट्रिकी पार्ट। अभी ट्रिकी पार्ट इसलिए क्योंकि द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, बहुत ज्यादा लैंग्वेज घुमा के पूछी गई थी, एंड दैट मेड इट अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। डेटा सफिशिएंसी बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग वो भी बहुत इजी था। कंपैरिजन अरेंजमेंट, अरेंज द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ हाइट और अरेंज द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन। ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग वाज आल्सो अ मैनेजेबल सेक्शन, also a manageable section। overall अगर हम देखें the level of difficulty was similar to IPMAT Rohtak 2023, मतलब अगर हम level of difficulty की बात करें 2023 का level of difficulty एंड 24 का level of difficulty almost similar था, so we can say that the cutoffs are going to be in the similar range। in the next slide we are going to look at the cutoffs, category wise cutoff। IPMAT Rohtak कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी? लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 409 मार्क्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये साल वो 380 से 400 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि
पेपर अभी 472 मार्क्स का ही हो गया ना, 8 मार्क्स तो आपके हाथ के वैसे ही चले गए. सो देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ +-5, है ना. मतलब जो 409 था, ये साल वो 400 401 तक जाएगा, या थोड़ा सा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर भी हम देखें तो वो 390 तक भी आ सकता है. If you are expecting to score 380 to 400 marks, you have a good chance of getting a call from IPMAT Indore. ठीक है. Then comes EWS category 340 to 360, NCOBC 340 to 360, SC category 240 to 70, ST category का, and then this is disability candidates where general category cutoff is this much, NCOBC, SC, ST, and these are the cutoffs. अभी आप बोलोगे ये एकदम सेम रहता है. The number of seats are also very low. So a candidate who is a person with disability followed by a category candidate, ऐसे बहुत कम candidates रहेगी, इसलिए इनका कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे रहते हैं. द नंबर ऑफ सीट्स आर ऑल्सो वेरी लेस. सो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो अच्छे से एंड तक देखो. मेक श्योर कि भाई आप ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके हिसाब से आपका कितना स्कोर आएगा वो चेक करो. Now the very important part after this is going to be your interview process, personal interview process. This is going to play a very major role in your overall admission process, in your overall admission selection. So make sure कि आप interview के लिए prepare करो. We train a lot of students for interview and we have cracked the IPMAT Rohtak interviews multiple times. Our students have cracked it multiple times. So if you are willing to get into IPMAT Rohtak and want to prepare for the personal interview section, do connect with us on the numbers given in the description. Thank you so much. Jai Hind.